My dear students, welcome to chemistry class. We are studying today properties of metals, physical properties of metals. हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में 3 प्रॉपर्टीज देख चुका था। पहला लस्ट्रस, दूसरा मैलिएबिलिटी और तीसरा डक्टिलिटी। नाउ वी शैल स्टडी sonorosity. Metals are fourth property. Metals are sonorous. सोनोरस का क्या मतलब होता है कि मेटल पर अगर स्ट्राइक करे कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से तो वह साउंड प्रोड्यूस करता है. सो दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस. मेटल्स आर सोनोरस. सोनोरस का मतलब है दैट इज दे प्रोड्यूस ringing sound when strike with hard surface. Ringing sound when they are hammered, they produce ringing sound on striking with hard object. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि स्कूल बेल्स जो होता है वो मेटल का बना होता है. स्कूल्स बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल. स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स. और आपको बता दें कि स्कूल बेल्स में मेटल्स कौन कौन प्रेजेंट होते हैं. वह है कॉपर और एसएन टीन. कॉपर और टीन के मिलने से वो बना होता है स्कूल बेल्स. और 4:1 रेशियो में होता है. ये 4:1 रेशियो में प्रेजेंट होता है बेल मेटल में. इस तरीके से दिस इज the most important property of metal, sonoricity. That is, metals are sonorous. That is, they produce sound on striking a hard surface. The next property is conductivity, thermal conductivity. The fifth property is thermal conductivity. Metals are good conductor of heat. So it is the fifth property. Metals are good conductor of heat. हीट का ये गुड कंडक्टर होता है metals are good conductor of heat. That is why cooking vessels are made up of metals. Silver and copper are the best conductor of heat, whereas lead and mercury are among the poorest conductor of heat. Silver and copper, silver that is Ag and copper ये बेस्ट कंडक्टर होता है. बेस्ट कंडक्टर हीट का, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट का बेस्ट कंडक्टर है. जबकि लीड पीबी जो होता है वो पोरेस्ट कंडक्टर होता है. मरकरी भी ये पोरेस्ट कंडक्टर है. पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. Mercury are the purest conductor of heat. Purest conductor of heat. This is the remarkable property, heat. Now this property is called thermal conductivity. Thermal conductivity is due to movement of kernels and electrons. ये जो thermal conductivity है वह मूवमेंट ऑफ
कर्नेल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है. This property arises due to motion of kernels. कर्नेल्स क्या होता है? पॉजिटिव आयंस को कर्नेल्स बोलते हैं. एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. So this is the important property. With increase in temperature, kernels start vibrating, creating resistance in the flow of electrons. With increase in temperature, with increase in temperature, ऐसे आप लिख सकते हो, increase in temperature. With increase in temperature, kernels start vibrating. Creating resistance in the flow of electrons. इसलिए टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टिविटी जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटता है. टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटता है. रेसिस्टेंस बढ़ने के कारण ये ऐसा होता है. नाउ द सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिकल property. Metals are good conductor of electricity. They are the good conductor of electricity. So all electrical wires are made up of metals. Silver is the best conductor of electricity, followed by copper. Copper is less than silver, and then gold, then aluminium, then tungsten can also flow electricity, and then mercury is Hg. So this is the correct order of electrical conductivity. Temperature rises, electrical conductivity decreases. Temperature rises, electrical conductivity decreases. So this is the relation between the temperature and electrical conductivity. Now we will study other properties of metals other than the electrical conductivities. Most metals are hard and solid, but mercury exists in liquid state. Mercury is only metal which is liquid at room temperature. So next, seventh property, they are hard. Metals are hard. They exist in solid state. Almost metal solid होता है. They exist in solid state except mercury. Hg is liquid at room temperature. Mercury is liquid at room temperature. Metals have high melting point, but gallium and cesium have very low melting point. So eighth property is melting point and boiling point. They usually have high melting point. This is due to a strong metallic bonding. Due to body heat, gallium and cesium have low melting point. Gallium and cesium have low melting point. Cesium is most metallic. Lead and Sn also behaves
also have low melting point. One thing is important, Pb and Asian, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। तो लो मेल्टिंग पॉइंट किसका किसका होगा, गैलियम का, सीजियम का, लीड का, एशियन का। Pb and Asian are purified by liquefaction method. They also have low melting point. Tin easily flows on heating. Similarly in case with the lead. So most of the metals have high melting point. Gallium and cesium have low melting point. Most metal produced basic oxides when dissolved in water. Most metals produce basic oxides or hydroxides when dissolved in water. Magnesium oxide, calcium oxide are the bases. ये बेसिक होता है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनाता है, दैट इज MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये स्लैक्ट लाइन हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्विक लाइन है, milk of magnesia is magnesium hydroxide. So you can see this reaction. Metal oxides are basic in nature because they react with water to form bases. Calcium oxide own reaction with water to form calcium hydroxide. Calcium hydroxide, magnesium hydroxide are bases. Calcium oxide and magnesium oxide are also bases. Magnesium on reaction with air to form magnesium oxide. Magnesium on burning in air produces magnesium oxide. So these are the some important properties of metals. Metals show remarkable properties to that of non-metals. Aluminium is highly reactive metal, but steel used for making cooking utensils. Aluminium forms passive layer of oxide, that is Al2O3. This metal becomes less reactive and therefore can be used in making utensils.